What is love? How is then intimacy different than passion? For men, it is like how rich the man is and how virgin and young the woman is. पर आपके नॉर्म्स देखिए ना, सारे ऐसे ही हैं, आपको सोशलाइज ही ऐसे करें। लड़की यंग होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि when the man gets old, there should be somebody to serve. अभी पर Gen Z is redefining, but they are also getting into a structure. अब उनका यही फॉर्मेट स्टीरियोटाइप हो गया, सिचुएशनशिप, अच्छा। ये है वो है, तो कमिटमेंट हट गया। You don't have to put love in boxes. Different stages पे different hormones होते हैं. What would be more detrimental on your mental health? Being alone or being cheated? Because you're only thinking of that. उसका thinking से ही आपकी बॉडी इतनी stimulation होती है, charged up हो जाती है. It's like cocaine. Dopamine जब रिलीज होता है तो उसका इफेक्ट तो कोकेन का जैसे ही होता है ना, वेरी हाई। पूरे टाइम फैंटेसीज आती हैं आपको। What about ex? इतने साल मैं दूंगी रिलेशनशिप, टॉक्सिक हुई, अनहेल्दी हुई, तब तो नहीं, तब तो डोर क्लोज, कुछ नहीं, यू हैव टू गेट आउट। प्यार क्या है? प्यार प्यार इश्क है। इश्क और मोहब्बत मुझे नहीं पता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बुद्धि है, जो भी है मेरे से रिसॉल्व होगी। Let us ask our guest about what love is and what are the issues related to it. Our today's guest is Dr. Chavi Bhargava Sharma. She is a counselling psychologist and has an overall experience of 36 years. That's her podcast. 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 Very warm welcome to the show, ma'am. We are very happy to have you here. So you have been practicing psychology for so many years. आपके पास बहुत अपनी प्रॉब्लम्स लेके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स लेके लोग आते होंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहती हूँ, टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि प्यार है क्या, मतलब किस चिड़िया का नाम है, मतलब प्यार क्या है? दोस्ती है, जैसे हम मूवीज में सुनते हैं प्यार दोस्ती है, तो प्यार दोस्ती है, शादी है, लिव इन है, कंपैटिबिलिटी है, अडेप्टेबिलिटी है या लायबिलिटी है क्या? Yes, thank you for calling me here. प्यार एक स्पेक्ट्रम है, okay? और वो स्पेक्ट्रम कंस्ट्रक्शन से लेके डिस्ट्रक्शन तक का है। टू एंड्स उसके कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन है। एंड एज साइकोलॉजिस्ट हम लोग कहते हैं कि प्यार के तो बहुत सारी चीज़ें हैं। प्यार हैज सो मेनी वेरिएशंस, है ना। पूरा दुनिया ही प्यार पे चल रही है। यू हैव द मदर एंड चाइल्ड अफेक्शन, यू हैव बिटवीन टू फ्रेंड्स, एंड देन यू हैव द पैशनेट लव, रोमांटिक लव। और जो हम रोमांटिक लव है वो अलग लव है। सो प्यार की तो बहुत सारा इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है। और इंडिया तो ऐसा है कि हम पता नहीं हज़ारों साल से प्यार की बातें, पूरे दुनिया में पूरी लाइफ ही प्यार के पीछे मारधाड़ हो गई, प्यार के पीछे एग्जैक्टली यू नो मज़ोलियम बन गया, ताजमहल बन गया प्यार के पीछे। और हमारी तो बिल्कुल, हम तो उस कंट्री में रहते हैं जहाँ पर प्यार शिव और पार्वती से शुरू हुआ, नल दमयंती, वो वहाँ से प्यार शुरू हुआ। लव स्टोरीज, फेमस लव स्टोरीज, राधा कृष्ण, मीरा, सम सेंचुरीज अगो। और फिर वहाँ से हमने शुरू करा। फिर आपके रोमियो जूलियट, वो एक अलग स्टोरी है, जो एक टीनेज प्यार जिसमें मर जाते हैं। और आप कितनी स्टोरीज हैं, ये सारे प्यार ही है। एक वो प्यार है और एक आजकल जेनजी का प्यार है, जिसमें मतलब उन्होंने प्यार ज्यादा जार्गन्स डाल रखे हैं बीच में। सिचुएशनशिप हो रही है, ब्रेड क्रम्बिंग हो रही है, घोस्टिंग हो रही है। एक व्हाट इज इट, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, कहाँ पे आज हम हैं? हाउ डू यू लुक एट इट? सी प्यार इज, एज साइकोलॉजिस्ट विल टेल यू, 3 चीजें हैं प्यार में, ओके? एनीथिंग, it begins with intimacy, then there is passion, and then there's attachment. और अगर हम ब्रेन की बात करें, total eclipse of the brain. It's like hormones, you know, it's a chemical heart. So, but Gen Z ने क्या करा है, इन स्टेजेस को ही उन्होंने, अगर आप इंटीमेसी का हटा दो तो आपका खाली पैशन रह गया, है ना। एंड हर जगह देयर आर डिफरेंट हार्मोन्स इन्वॉल्व, तो उन्होंने इन्हीं के साथ प्ले करा है। और जेन ज़ी का प्रॉब्लम ये हुई है ना, एंड आई एम वंडरिंग, जो अब आ रही है जनरेशन, जो और भी जिसने खाली सोशल मीडिया पे है, उन्होंने क्या करा है कि वी आर सोशल एनिमल्स ना, वी नीड पीपल फॉर ईच अदर. सो इफ दैट फेज इज गॉन, like flirting, that whole thing of, being, just
Playful. playfulness, that Getting to know each other personally. वो हट गया है. So Okay. it's like, and they don't know cues. You know, the problem with Gen Z is उनको cues नहीं पता चलते, because which human to human interaction में पता चलता है. ना? That's why the problems भी इतने सारे हैं, वो भी नहीं है. And they are like, it's a very sanitized kind of thing. They have done away with all the gray areas. यहाँ पे relationship में gray areas होते थे, जो restless nights होती थी कि क्या होगा, does that person like me, उसने मुझे 2 बार looks दिए. हाँ. You know, movies, अगर हम हिंदी सिनेमा ही देख लें, तो जो 2 बार looks दिए, ये दिए, अब वो तो चला गया है, because you have everything clear cut. It's a situationship. They're not learning how to, उनका resilience इतना नहीं है. They're not, मतलब उतनी patience कोई नहीं हो करता कि भैया हाँ ठीक है, at all you're suiting in my equation, then fine. yeah. So because love has many parameters, they have brought it down to one, which is passion. Okay. So, or passion is what for them it is. Like, and how is then intimacy different than passion? Okay. See, intimacy involves friendship. It involves getting to know others, affection. You know, lot of all the shades of the dating phase, the flirting phase. You know, you like somebody's company, connectedness. Okay. If I'm connected, there are conversations happening. You want to connect to somebody. And वो क्योंकि हम इंसान को, when we are in love begins like that, ना? जब if you take Hindi cinema और कोई भी latest भी ले लो, तो you are looking at each other, there are vibes, all of that. That's intimacy part. जब you are getting to know each other, inner circle में जा रहे हैं, you know, in the Gen Z terms, the vibes are matching. Vibes are matching. When you talk, you can feel a certain electricity, a certain energy around the person. That's intimacy. That passion, those butterflies in your stomach. Butterflies. You only feel when you meet a person in person. And if you look at this, then the hormones are, they're not they're not those passion hormones. The hormones are also for friendship. They're, oxytocin, you feel good, vasopressin, relaxed. It's not like the high is not coming in as yet. Of course, the brain is firing, but it's like being happy. It's a happy place. The person gives you happiness. You want to spend time. You can do things together. You go for coffee. It's the intimacy phase. That's the intimacy phase. And उसके बाद passion आता है. हाँ, उसके बाद passion. तो अब Gen Z अगर online dating apps या सारे ऐप वो देख, उन्होंने जो intimacy है ना, उसको उन्होंने cut करके only in that right click, left click उसी में कर दिया. हाँ. ना, you are not really getting to know. So बाद में, and then it comes after this. So situationship is what? You are enjoying something, you're there. First 2 phases तो आ गए, intimacy आ गई, passion आ गया, commitment नहीं आया. You know, so it's Gen Z is not different. They've only used more jargon. Language बहुत लिया है, क्योंकि love तो same ही रहेगा ना. उसको उसके आप कितने स्लाइसेस कर दो, केक तो सेम है. आपकी बातों से वही लग रहा है कि लव में बहुत सारे लेयर्स थे, आपने वो लेयर्स काट के ना उसको फॉर्मेटिंग कर दिया उसकी. है ना, हर एक को सेम फॉर्मेट में बैठा दिया है कि अभी नाउ सिचुएशनशिप. नाउ व्हाट इज ब्रेड क्रम्बिंग? लाइक वी हियर अ लॉट अबाउट ब्रेड क्रम्बिंग एंड घोस्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट. आई वांट यू टू ब्रेक इट डाउन फॉर माय व्यूअर्स. Okay, so what Gen Z has done is they have relationships have different stages. Okay, for them. So breadcrumbing is that you throw breadcrumbs to the birds. Okay, थोड़े crumbs डाल देंगे. So you're neither committing. It's again one of those phases. The third phase आया नहीं. You don't want to commit, but you don't want to let go also. ठीक है. So you are just every now and then you'll throw some breadcrumbs. So the person चुपता रहेगा. You know, it's just like, to keep that person reserve में रखो. वो भी नहीं है, दूसरा हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन हम नहीं चाहते, तो हम उसको जाने भी नहीं दे सकते, है ना. You are not saying no, right? And that's it. तो आप इसको कैसे डिफरेंट देखते हो? लाइक जैसे होता है ना, एक होता है कि वी आर अनश्योर, वी आर अनक्लियर अबाउट समथिंग. सो इन दैट केस ऑल्सो आर वी ब्रेड क्रम्बिंग, या फिर ब्रेड क्रम्बिंग तभी आता है जब आप इंटेंशनली किसी को यूज करते हो? Yes. देखो, if you're not sure also, see, if I'm not sure about something, then there are many ways to go about it. I can be upfront, because Gen Z कहती है they are authentic.
then they have to be upfront that ठीक है, I'm not sure, let's take it. That's then when you're not sure to commit, it's a situationship. Now breadcrumbing is you know you're not sure, But you're It's not letting the other person know. yes, and you know you're not sure, and but you don't want to let go क्योंकि we want somebody there, तो हमें hold भी करना है और जाने भी नहीं देना है. Yeah. ना, not sure is this, but here you are sure you don't want her or him, but you're not letting go. You're not letting go. You're just keeping them hooked on. Yeah. Okay? कमिटमेंट से इतना डरता क्यों है जेंजी? या कोई भी बंदा पसंद तो करते हैं, वो सब करते हैं, बट कमिटमेंट की क्या प्रॉब्लम आ जाती है लोगों को? देखो कमिटमेंट की तो बहुत टाइम से प्रॉब्लम है, स्पेशली मेन की, अभी वुमेन की भी सेम हो गई है बिकॉज वी आर टेकिंग ऑन द सेम रोल्स एंड एवरीथिंग. सो यू रिमेम्बर फ्रॉम लॉन्ग टाइम वो एक मूवी आई थी रणबीर कपूर एंड या दीपिका पादुकोण की, जिसमें उसने कहा था कि नहीं कबीरा जो वो भी था, he didn't want to commit. Like there were 3 women. Yeah. I am also forgetting the name. Okay, we editing में डाल देंगे. हाँ जी. Cocktail. नहीं कॉकटेल Cocktail में नहीं, जिसमें वो गाना भी था खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, वो ना? नहीं, जिसमें कबीरा मांझा और एक वो वाला है ना दिल्ली वाली शादी, दिल्ली वाली ये जवानी है दीवानी. ठीक है, ये तो आप edit कर देंगे. हाँ यार, it's a cool moment. So when we look at ये जवानी है दीवानी, या सब लोग अब फ्रेंड्स पता नहीं ये जेंजी देखती है या नहीं, उसमें चैंडलर बिंग, he was so scared of commitment. Yeah. And then he committed ये committed. because that's the stage of But चैनल को हम ब्रेड क्रम्बिंग करते हुए नहीं देखते हैं ना, not at all. है ना? मतलब he's a इतना clean डर character. He's afraid of commitment, but उसका burden किसी और को नहीं लेना पड़ रहा उस problem का. And he is clear. And then when he commits, the loyalty is also his. Yeah. See, because he's the most loyal then Yeah. of all the friends. That's Right. that's the commitment stage of a relationship, of of love. तो ये अभी जेंजी में या कह लो अभी न्यूअर जनरेशंस में मिसिंग है. हाँ. So you see it as an impact of social media. Yeah. Social media मतलब हाँ, आपको क्या लगता है कितना रोल? कईयों को मतलब I have seen stories wherein they have got their soulmates through these dating apps only, because that's a plus of this thing. Yes. You आपकी रेंज बढ़ जाती है. You can get to know more people जो आप पर्सनली शायद उतना नहीं जानते. But what is the plus and minus of social media and relationship? All right. So you have so many, okay? You have like thousands. You can do right swipe, left swipe, जो भी करना है आप कर सकते हैं. ठीक है, that is the plus point. You get a lot of data. The minus point is you get a lot of data. तो आपको चूज करने में, एक को कमिट करने में कहीं तो स्टॉप लगना पड़ेगा ना. आप कितनों के साथ ट्राई करते रहो. I think it is adding on to the confusion. Of course. And also जो phases of love है ना, जो passion है and newness है, that's a high. Adrenaline है उसमें. So dopamine, it's like cocaine. You get addicted only to the chase. जो हमारे टाइम में हम कहते थे ना chase, flirting. तो जब शुरू होती है relationship, that's a high. तो आप उसी में जैसे ही वो high खत्म होता है, तो फिर आप दूसरे phase में तभी जाओगे. For family, you have to go into the commitment phase. ये वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप high में ही रहना चाहते हो. You're not learning that your body changes. You have to learn to stabilize. वो high phase जो है ना, वो 6 महीने से लेके 2 years मैक्सिमम चलेगा क्योंकि हार्मोन्स उतने ही रहेंगे. एंड दैट इज दिस उतना ही चलेगा. तो फिर दैट इज व्हाई वी गेट आउट ऑफ रिलेशनशिप्स, देन वी लुक एट समबडी एल्स. सो सोशल मीडिया गिव्स यू मोर चॉइसेस. यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, बट देन चॉइसेस ऑल्सो बिकम योर problem because somewhere you have to put a stop. People have met soulmates, they are lucky. And I don't know, twin flame bhi hai. They have different things. You have a twin flame, you have this. What is a twin flame? Twin flame is you feel somebody who's just like you, vibing with you, energy level, everything. Just like a twin. It may be romantic, it may not be romantic. So like अब हम देखते हैं कि इस चीज को आप जैसे मैरिजेस वगैरह जो होती हैं, आपको लगता है कि अनस्टेबल हो रही हैं, या फिर पहले होता था कि पहले वाला कॉन्सेप्ट, अगर आप मम्मी पापा लोगों की एज में देखो, उनको था कि हाँ एक बार कर लिया, एक ही बंदे से कर लिया तो निभाना है. आपको लगता है कि जेनजी और न्यूअर जनरेशन जो है, सिंस दे आर एक्सप्लोरिंग मोर ऑप्शंस, तो उनको ज्यादा
बंदे का ज्यादा पता है, मतलब यू आर गेटिंग इनटू अ मैरिज फॉर दैट पर्सन मोर देन फॉर द क्या बोलते हैं, वो होता है ना कि आपकी एज रिलेटेड के हाँ ये तो करना ही करना है, कस्टमरी नहीं रह गया है, बट दे आर गोइंग इन मोर फॉर द पर्सन एंड नॉट जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट के ओके एज हो गई है आप तो शादी कर ही ले, सब कह रहे हैं तो शादी कर ही ले. They are also, when they are going in for the person, today's marriages, I will not say they are going in for the person. Along with that, they are going in with their own needs. Okay, my needs have to be satisfied. If my needs are not met, if I'm not, then the relationship is over. Yeah, it's like this. The story you tell yourself in the end. कि आपकी romantic story क्या है? Is it going to be your knight in shining armor आ रहा है और आपको sweep करके ले गया घोड़े पे, या आपकी ये है कि marriage is a transaction, या it is my needs, the sexual high has to be there. फिर तो जिसमें आप अगर केवल because somebody gives you a sexual high, वो marriage I can say that is not going to last till you don't, when you change it to I want to be with that person. We want to grow old together, and I want to have children with that person. Somebody, because if you, I have no objections to the situationship, anything, but when you're getting a child into the world, then I think we have to rethink, because when you look at children, then who's going to take the responsibility, everything. And I think end of the day, people should be allowed to, there are choices. And जो बड़ी जनरेशन है, हमारी पेरेंट्स ने बहुत चीजें हैं जो शायद इनको सहनी भी नहीं चाहिए थी, but they had no option. Today there are two independent people who are coming together and it can be, and the relationships today have more depth. It's a very beautiful relationship. Okay, so you think that today it has more depth? It can be, and it can go to much level, because you are knowing each other and then you're getting into it. Love or arrange doesn't matter. क्योंकि आप arrange में भी जो भी है, Gen Z तो शायद arrange में है नहीं, but अगर है तो भी तो you're getting to know the person. आप ऐसे ही हाँ नहीं बोल रहे. So it can go to a deeper level, but provided you should be willing to commit. That commitment जो है वो है. Otherwise, कई relationships ऐसे होते हैं कि if there is no passion, if there is no intimacy, if there is no attachment, then it's better to let go. As long as, it's okay. It's okay. तो soulmateship आपको लगता होती है कि because we have seen such beautiful couples separating, like मेरे को दिमाग में आता है जैसे मैं ऋतिक रोशन और उनकी बेटा आपको देखती हूँ, या ऐसे और भी कपल्स है, मलाइका एंड अरबाज को देख रहे थे, काफी टाइम तक हमने उनको साथ में देखा, सो मच ऑफ कमिटमेंट, लाइक स्पेशली मैं ऋतिक और उनका कहूंगी, और कमल हासन और सारिका का भी कहूंगी. मतलब आई was watching that rendezvous with Simi Grewal, and they were so much in love, and they fought against the world, and they fought so many odds together, and today we see them separate. So it like Gen Z क्यों ये भरोसा करे कि हाँ these relationship last? हमारे सामने ऐसे भी examples हैं. So what is your take on it? Like does it last long? या ऐसा कुछ होता ही नहीं है, चांस की बात है, हो गया. Like relationship एक आपकी क्या बोलते हैं ना, उसमें मेहनत मांगती है कि for keep sake you have to then sacrifice also, and you have to accommodate the other person. मतलब है ना, ऐसा है या तुक्के से चल रहा है कि नहीं ये आपका मेहनत का काम हो रहा है रिलेशनशिप में, या तुक्के से चल रहा है? नहीं, you have to invest so much. You have to invest. Yeah. And जो जैसे हम इनकी बात कर रहे हैं, sometimes two very wonderful people can also separate. Just because you're separating doesn't mean that you are bad. Okay? Somewhere एक decision ले लेते हो कि we are not compatible. There must be something where both realize that beyond this we cannot. And then there are very beautiful relationships where you just keep going on, and they've worked on themselves, resolve issues, and that's it. And then later they feel children hai, grandchildren hai, there are so many things to bind you. So in Indian marriages, if I'm being very honest, the passion and everything, once there are children and grandchildren, it's a family thing. It's love is not, you're not marrying into one person. You're marrying into a family. So then love changes. It's not कि मुझे फिर एक बंदा नहीं होता सेंटर पॉइंट, फिर आपके बच्चे हो जाते हैं,
फिर आपके बच्चों के बच्चे सेंटर पॉइंट हो जाते हैं, एंड ऑल दैट, देयर इज सो मच टू डू. सो सडनली देन यू रियलाइज कि अरे ये, इसलिए रिलेशनशिप्स में आपको देखना पड़ता है कि आपको कौन कितना इंट्रोस्पेक्टिव है और आपको क्या चाहिए. इसलिए मैं कहती हूँ ना, स्टोरी अपने दिमाग में जो हम देते हैं अबाउट माई व्हाट इज माई लव स्टोरी, इफ यू लुक एट व्हाट इज योर लव स्टोरी, यू विल नो कि मैंने यही चाहा है. सो इफ यू लुक एट कि मेरी लव स्टोरी में हैप्पी फैमिली है, या हमने वही पिक्चरें देखी हैं जो करण जौहर टाइप, कभी यू नो सब चीजें अच्छी एंड देयर इज दिस एंड फेरी टेल एंड बच्चे भी आ रहे हैं एंड एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी इज लव्ड, एंड तो फिर आप यू विल ट्राई टू बी इनटू दैट ओनली अंटिल अनलेस आपको बहुत बड़ा झटका लगे, टॉक्सिक थिंग्स और समथिंग, एंड देन यू विल गेट आउट. अदरवाइज आप कहोगे ये है सास अच्छी है, ओ ये है दादी, सब चीजों में आप खुशी खुशी हो जाओगी, डल जाओगे. यू नो, हम आपके हैं कौन, ऑल ऑफ दोस सूरज पर जाती है कि सारी मूवीज ऐसी. So I think that generation would have all. I think they were also in some kind of a la la land only. यहाँ का अलग चल रहा है और उनका रिकॉर्ड अलग चल रहा है. I think वो भी that is also impractical. I do not see that thing happening. It never ground. Does not happen like that. Yes, so it's this whole thing they created. And वो इसलिए मुझे लगता है कई बार movies are a fantasy. तो वो इसलिए है doing के ऐसा होता नहीं है. You want it, but that's so एक जनरेशन को हम देख रहे हैं कि जिसमें फिजिकल इंटीमेसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रखी. मतलब फॉर देम इट इज जस्ट टू रिप्रोड्यूस. Whereas on the other end of the spectrum, like you say, love is a spectrum. So the other end of the spectrum, we see that a generation who's paying over emphasis on physical intimacy. So, like, how much, according to you, is physical intimacy important in a relationship on a count of 1 to 10? okay. On a count of 1 to 10, it is very important. I'll say 10. You know, why is physical intimacy not important? It is the only time you connect, and you connect at a very on a very spiritual plane also. It's not that. And that's why I feel that this easy way, what Gen Z has done is they have taken that one act as it's not like food and going to the toilet and you need food and you need to drink water and you need to go to the toilet. They have reduced it to that. So that is all they are getting out of it. You know, satisfaction. It's like once you eat food, satiation, then you want food again. And then you want a different food. Okay, so aapne, if in our minds we have equated it like that, then love loses its sanctity because it's also very physiological. It's a need. Love can be, sex is a need. ठीक है, उसको अगर आप उसको needs को आप किस level पे ले जाते हो, वो भी है. Don't give a, मतलब ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि भैया sexual intimacy is important, but with your right committed partner. Yes. See, because many people will tell you the body is a temple. So especially for women, you know, it's not, I will say for women, not this, because for women and men. तो आप body, if your body is a temple, तो आप क्या चीज उसमें डाल रहे हो, क्या नहीं डाल रहे हो, और किसमें डाल रहे हो, that matters. And I'm being very honest. You know, because people are not, Gen Z talks of vibes, this is where the vibes come. It's a very, it's not, physical act is not just the body. It's not that superficial. Yes, it's a very deep act. You know, and if you talk to any of these spiritual people, they'll tell you that's one point where you really witness, where you come, where souls really meet. Their souls really meet. Exactly. Can meet. Potential hai. Potentially. Right. If with the right partner. Yeah. Sorry, with the right partner. With the right. So if it is that important, why would, the parents would be, not approving of this? They were like, nahi. होता है ना, they are very scared when dating and all. They're like, ठीक है, जाओ अपना बात करके आओ, कॉफी पी के आओ, but no touching, no. So parents have a reason, because right from, I think, बहुत उससे sex has always been taboo. Because that's one way when I see it, it's, because marriage has never been just marriage, okay? It was about lineage, it was about आपका कहाँ पे आपकी generations कैसे चल रही हैं, तो राजा महाराजा वो सब तो आपको, और कौन है और किस चीज से procreation होता है, of course. So you have to keep it taboo. No, otherwise love तो when you're a teenager, love तो blind नहीं होता है, but chemicals ऐसे करते हैं कि you will just go with anybody. तो इसलिए
रोक के रखना या जल्दी शादी करना, जिससे प्योरिटी ऑफ योर आइडिया ऑफ प्योरिटी आई वुड से, कि उनके हेड में ये आइडिया ऑफ प्योरिटी या फिर आपकी, अच्छा क्रूडली बोलो तो आपकी नस्ल अच्छी होनी चाहिए, है ना? घोड़े का भी हम देखते हैं, सबका देखते हैं, तो इंसानों का क्यों नहीं देखेंगे? कि आई मीन दैट इज व्हाट दे आर डूइंग, कि यू शुड बी मैरिड इन द राइट फैमिली. If you're a princess, you should marry somebody who's your level, good genes, who has equal respectability. Right. You're bringing out somebody जो प्रिंस बनेगा या राजा महाराजाओं के घर में, बहुत absolutely it was very clear. ना इसलिए मारकाट हो जाती थी, लड़की को उठा के ले गया या कुछ भी कर लिया, nothing doing. आपका वो होना चाहिए. And it was not just this marriage, was also political. ना क्लियोपैट्रा एंटनी ना, आप उसकी देख लो, या सो एंड सो, यहाँ पे भी हर जगह राजाओं का वहां से होगा, उसको शादी कर देते. अकबर ने क्या करा था ना, ये सब. सो इट वाज नॉट, मैरिज इज नॉट जस्ट दिस. और बाकी हमारे को पता नहीं है कि कितने अफेयर्स थे या वो थे, बट ऑन द फेस ऑफ इट दिस इज द रीजन व्हाई, एंड दैट इज व्हाई इट वाज टैबूड, कि यू कांट जस्ट गो एंड यू नो प्रोक्रिएट एंड किसी के भी बच्चे को नहीं जन्म दे सकते. And it also more about, like, this is about procreation, but they're also worried about the virginity, losing the virginity. Yes, That is a big deal. that's a very Victorian concept, huh? Okay. It is a very Victorian concept. But ये था कि woman का sanctity कैसे हो? Virginity is one way, because you want to be sure that the woman you are taking is pure in all, has not been taken by any other man before. Okay, that's the way. In that way, my property should be a new property. Okay, women were treated as property only, ना? तो अभी कहते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड ऑल, तो पहले चलता हुआ आ रहा है, चलता ही आ रहा है. है ना. For men it is like how rich the man is and how virgin and young the woman is. Yes, or where is her standing? You know, and people who break, पर आपके नॉर्म्स देखिए ना, सारे ऐसे ही हैं. आपको सोशलाइज ही ऐसे कर रहे हैं कि लड़की यंग होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि when the man gets old, there should be somebody to serve. ठीक है? और have you ever thought of marrying? अगर हम सोचते हैं कि a man will marry or will date somebody who's younger, have you ever thought of dating somebody who's older? आजकल Gen Z तो फिर भी कर रहे हैं, but there's a term, it's not common. है ना, it will come in news. एक मैं पढ़ रही थी कि they married and the boy is something, and the girl models is also 20 years old. Arjun Kapoor and Malaika. That's one. पर उनके लिए कितने जोक, कितने मीम्स बनते हैं. It's not easy, क्योंकि आपने एक social structure है. Marriage, everything was, it had become a social structure. अभी पर Gen Z is redefining, but they are also getting into a structure. They're not, I think, अभी experimenting से शुरू हुआ, and it was experimentation, and you're discovering new aspects. But you're getting again stereotyped in that same mode. So you have Gen Z and the next. Like, how can you say that? Like, how is this general stereotyping? I mean, अपने ही format को stereotype कर रहा है. अब उनका यही फॉर्मेट स्टीरियोटाइप हो गया. सिचुएशनशिप, अच्छा. ये है वो है, तो कमिटमेंट हट गया. You don't have to put love in boxes. तो हर जनरेशन अपने हिसाब से उसको कर रही है. कोई एक तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है, कोई दूसरे तरीके का, बट एवरीबडी इज लाइक पैटर्नाइजिंग. सो इफ Gen Z में somebody wants to, उसका स्टोरी है कि मुझे लव स्टोरी ही चाहिए, I want this, तो she will be made fun of. उस तरह से ये है. So I mean, the love is love. Like one of my knowns, मैं मेरे ऑफिस में वो भी यही बता रही थी कि उनके में यही है कि अगर एक के साथ ज्यादा टाइम अगर आप यू आर गोइंग अराउंड विद द सेम पर्सन, देन लाइक इसे शादी करके ही मानना है क्या, मतलब इन द सेंस दैट दे आर सो मच इनटू दिस थिंग दैट व्हाई आर यू नॉट ट्राइंग अदर पीपल, व्हाई आर यू फिक्सेटिंग विद दैट वन पर्टिकुलर. दैट ये भी प्रॉब्लम है. अगर किसको पसंद आ रहा है तो वो आई थिंक पीयर प्रेशर में भी नहीं एकदम से जा सकते. देन यू हैव टू एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस. So you have to see, and love के stages तो यही है, intimacy, passion and commitment. Commitment नहीं होगा तो family नहीं होगी ना. और फिर ऐसा होता है कि when you keep going, then a lot of people come and they go through depression because because women are supposed to be nature and we are animals also, social animals भी हैं. हम animals तो है ही ना. हम biology को कितना आप रेजिस्ट करोगे. Women are born to give birth, okay, to take
nature's call for nature. Sex is nature's calling for it to procreate. हम procreation के लिए ही करते हैं, सारे जानवर भी वैसे ही करते हैं. तो जब आप करते हो तो आपके जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो दूसरे होते हैं, ठीक है. एंड जो रिलेशनशिप्स है, अगर आप खाली डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, तो जैसे आपका पर वुमेन का एस्ट्रोजन है, ऑक्सीटोसिन है, दे ऑल पैशन क्रिएट करते हैं एस्ट्रोजन, लेकिन it also makes you a little, because it's for procreation, so it also makes you have a soft corner or fall in love with the man. Okay, but men, when they have only sex, unka khali yes testosterone release ho. Yeah, like the other day I was talking to this gynecologist, so ma'am भी बोल रही थी for women it is more emotional and for men it is physiological. And it is hormone driven only. I mean, not that the men are doing this to hurt anyone, or अभी हो हाँ intent भी कई बार आ जाती है, but by default naturally also they are designed for like that, no? Because they have to spread their sperm everywhere, and women cannot. You know, you have to raise. Nature will only take care of nature. है ना? अगर आप, if you're a dog, then your aim is to procreate and produce more dogs. ठीक है? If you're a cat, it's this. So for humans also it is to produce. और हमने तो कर भी रखे. We've killed everybody else. हम ही बैठे. So, but the thing is that कि जब a man, if he's not in love, then it is only testosterone. But woman का जो estrogen है ना, वो ऐसा नहीं है कि खाली passion है. उसमें थोड़ा सा feelings भी, वो थोड़ा सा attachment भी आता है उससे. You know, you feel a fuzzy kind of thing for the man. ठीक है? और फिर next stage जब होती है ना, then when a man is in love, then it's not just testosterone. उसके साथ vasopressin भी आएगा. अच्छा, मतलब biologically also when a man is in love, तो वो चीजें enter कर जाएंगी. हाँ. Then the brain is designed for that. You're designed to procreate and save your species. They're designed to propagate your species. तो species को propagate करने के लिए स्थिरता चाहिए, क्योंकि ह्यूमन इन्फेंट तो है. आप देखो एलिफेंट का बच्चा पैदा होता है, वो उसी टाइम काफ चलने लग जाता है. ह्यूमन इन्फेंट तो अपने पैरों पे कब खड़े होते हैं, हम 2 साल में तो चलना सीखते हैं. तब भी हम ऐसे, तो हम बाहर भी नहीं जा सकते. एंड कई बच्चे तो लाइफ लॉन्ग ही नहीं अपने पैरों पे खड़े होते, माँ बाप ही कर रहे होते हैं. तो ये है कि आपको, तो जब नेचर ने ऐसे बनाया है, तो फिर आप किस हद तक ले जा सकते हो, खींच सकते हो उसको. बैंड फट जाएगा फिर. That's why then you will come up with more problems. Right. I'm not saying everybody should have a child. I'm saying everybody looks for stability. क्योंकि आपके हार्मोन्स ही आपको फोर्स कर रहे हैं. अब फिर सेकंड स्टेज पे ये होता है कि विमेन के और ऑक्सीटोसिन भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे, तो यू आर मोर अटैच्ड. देन विमेन गेट मोर क्लिंगी. यू नो, देन यू फील, और अगर आप देखो तो देन विमेन विल फील इस रिलेशनशिप में रहना है. यू गेट अटैच्ड इमोशनली. लव इज ऑल्सो दैट. सब लव के ही पार्ट्स हैं, डिफरेंट फेजेस. So, like, we are bringing out the differences in the emotional and physiology of both men and women. So, why do men cheat and why do women cheat? Like, ऐसा different हो सकता है? मैं आपको एक interesting, it's not published, it wasn't published, पर एक research बताती हूँ, India की, and it's a marketing person, and they didn't publish it for obvious reasons. For one of the brands they did. And you won't believe, 4-5 years back, the number of women cheating on their spouses or on their partners is significantly higher than men. Okay, really? 70 something. Oh. And men cheat. But women cheat more. Today women are cheating. And what would be the time frame of this survey? ये कौन सा time का होगा? ये COVID times में. Pre-COVID. COVID. Okay. And then they shelved the study only. They said we can't publish it. And मैं statistically बता रही हूँ, statistically. In the 4 metros. Okay. कि men cheat, आपने बोल ही दिया था, testosterone. And when only testosterone is, इसलिए अगर men जो है ना, इसलिए जो men है, they can rape everything because it's only testosterone. And testosterone makes you very aggressive, makes you very, very violent. It can do that. ठीक है? But it's supposed to be. So if there is no love involved, no attachment, then it is just like an object. ठीक है? Women also, अब देखो पहले ये था कि for a woman,
earlier it was, you know, okay, you're not a virgin, ये वो. अभी तो वही, I will just say options are there. And then you're not happy in your marriage, but you don't want to leave it. Marriage की definition भी change हो गई ना. Right. It's- Now that there are open marriages also, people are openly going around and the partner is also aware and they both are okay. They're I think, is it healthy? See, I don't know, I am not going to this, but depends on their intent. It's not Like on the psychology, if we talk about purely get attached objectively to somebody. speaking, पहले वो होता था ना, हाँ. एक आर्मी ऑफिसर्स का भी चला था, स्वैपिंग, वाइफ स्वैपिंग, एवरीथिंग. उसमें फिर आप कर लो, एक्साइटमेंट आएगा, वो आएगा, but then you'll get attached to somebody else also. That's also high risk, and it's not, जो चीज़ें healthy नहीं है वो नहीं है, in the sense के आप कितनी चीज़ें बैलेंस करोगे. And suppose children are involved, then it is different. I always go back to children. If there are no children involved, you do what you want. हाँ. But if there are children involved, फिर it be becomes responsible. instability. Yeah. वो थोड़ा सा आ जाता है. बट अदरवाइज आपको ये करना आप कर लो, कहीं पे तो फुल स्टॉप या कॉमा तो डालना ही. And then if you're doing it for fun, I don't know, why are you like you're bringing in so much of complications rather than matlab easing things out for you, it is adding on to your complications. Yes. You know. And these things also add on to your mental complications. ना? Right. We need to simplify. अपने दिमाग को हमें सुलझाने हैं सारे थॉट्स, ये इमोशंस. ऐसा वो होता है कि ऑलमोस्ट व्हेन यू आर विद समबडी एल्स एंड यू आर टू टाइमिंग या चीटिंग ऑन योर पार्टनर, तो वो भी तो चलता है ना पूरे टाइम दिमाग में. या चीटिंग, यहाँ से ये झूठ बोलो, वो झूठ बोलो, सब चीज़ें आपको आपका समय भी खाती हैं. सब चीज़ें सिंप्लीफाई better, but in an open marriage, I think both know that you're going to be doing that. So, ma'am, like, what would be more detrimental on your mental health? Being alone or being cheated? Okay, very difficult question. It depends on the story the person has told. ठीक है, तो being alone is definitely being alone may not be detrimental, because if the person feels that okay, the person has a healthy social life, has things to do, then there it is not detrimental. But मैं आपके क्वेश्चन से ये देख रही हूँ कि जिसको loneliness या being alone से डर लगता है, और दूसरा बंदा ये है जिसको cheating से डर लगता है. ठीक है, क्योंकि cheating I mean उसको वो उसके लिए loyalty is the main thing. ठीक है, और यहाँ पे इसके लिए कि मुझे किसी के साथ रहना है, then both are equally, okay, it's both are equally devastating. Because when you got to get to know that your partner has cheated, then also it's very very devastating, even though you may continue. क्योंकि मेरे पास आए हैं. हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि आपके केसेस के हिसाब से आपको क्या लगता है कि मतलब किसमें ज्यादा लोगों को ट्रबल्ड? आई थिंक, I mean, if you ask me, then definitely I would say definitely hands down cheat. Okay, because hands down, yeah, cheating is it's very difficult. And I mean, for me, the most of the cases, the cases have come are equal between the women cheating and the man cheating. In fact, the woman cheating I have more cases of that and everything else. And you know, you feel, it's just that it's very devastating. And sometimes, you know, it's better, and then you go and tell the spouse or you go and tell your partner, and that breaks thing, because for the partner, loyalty is the crux of marriage. क्योंकि उसकी स्टोरी तो लॉयल्टी पे बेस्ड है ना. वी हैव डिसाइडेड टू स्टे टुगेदर फॉरएवर. कोई ये तो नहीं कहता. और दूसरा चीज है तो इट इज वेरी डेवास्टेटिंग. Like you must have come across cases when like you're saying cheating and everything. So, as a spouse, अगर किसी के spouse ने उसको man or woman whatever cheat किया और जाके honestly बता दिया, so what would be better for that person to कि भाई बता दिया to appreciate honesty and keep on living with that person, या फिर बता दिया but I appreciate but thank you but no thank you, now we cannot live together? Say if you've done something, ना, then I will always say what is your need कि जाके बताने का, है ना. अभी तक तो बताया नहीं. The first time आपके दिमाग में आया मेरे को उससे मिलना है, वो है तब तो बताया नहीं. आपने बताया भी इतने दिन बाद जब आपको लगा के, तो it is your need कि अपने गिल्ट को हटाओ, ये करो. What is the need? And if you're telling, then it has to be, it's very difficult. I mean, पूरे time the other spouse is absolutely broken. It's like, वो अपने गिल्ट का भार आपने अपने आप को उस चीज उससे मैंने तो honestly कर दिया. मैंने honestly बता दिया. Now the other spouse will stay in the marriage because there are children. हाँ, आपने तो
कई चीजों पे इतना सारा डाल दिया, एंड इफ देयर इज अ मैन ही विल से पता नहीं किसके बच्चे हैं, फिर ना आपने अपने आप को पूरे चीजों पे जीरो लिया है, और इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज चिल्ड्रन गेट टू नो, और अगर चिल्ड्रन नहीं भी है, सबको पता है, तो ये भी अलग है. सो इफ यू आर चीटिंग, I don't see what actually happens. And when the spouse stays, it's a very difficult. मतलब spouse को एक अलग level का understanding होना चाहिए. But trauma and बहुत सारी चीजें हैं, you know, going through nightmares, ये वो, love, hate, love and hate are same coins. Okay, and इंटेंसिटी सेम होती है दोनों तरफ. हाँ, बहुत उसे love का दूसरा side hate ही है. Indifference is the other. जब indifference होता है तब you got out of the love. Otherwise hate, love, hate. अच्छा, हेट के साथ भी आप रह सकते हो? हाँ, hate के साथ रह सकते हो या इंडिफरेंट के साथ, इंडिफरेंस के साथ अपने? देखो, जो प्यार है ना, उसके कई डायमेंशंस है. डिस्ट्रक्शन, अगर हम एक स्पेक्ट्रम पे जाएंगे तो एक पे डिस्ट्रक्शन है, एक पे कंस्ट्रक्शन है. डिस्ट्रक्शन के साइड में हेट है, ठीक है. इनडिफरेंस जब आप होते हैं ना, तब मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप रहो नहीं रहो, चले गए कहाँ चले गए. टिल आई एम इन लव, देन एंड इफ आई एम इन हेट, एक्चुअली आई एम आल्सो इन लव. मैं आपको स्टॉक करूंगी, ये देखूंगी, वो देखूंगी. It is a kind of part of love. Yes, it is part It is of a time you are still connected. Yes. When you break the connection, that's any. So अभी वाले सिनेरियो में जैसे चीटिंग वाले में अगर बता दिया, तो मतलब पहले हेट होगी और फिर इंडिफरेंस आ जाता है, या दे कंटिन्यू टू लिव इन हेट ओनली? देखो, और things resolve. Things may resolve. Okay, I will not say they don't, but it takes a lot of time. It is not 1 year, 2 years. It will always come back. But they may stay because दो बच्चे हैं, एक बच्चा है, उसके लिए रहना है. पेरेंट्स कह रहे हैं कोई बात नहीं, आप चल कर लो, कोई नहीं, अब इसको जाने दो, एक बार ही तो हुआ है. And you also think कि ठीक है, marriage is not about, you know, individually I don't know whether they will have physical intimacy again or not, you know, but बच्चों के लिए they are one family. बड़े हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें क्या है, मे बी इंटीमेसी भी हो जाएगी, है ना, वो है. लेकिन इनिशियली इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो आपको लगता है कि ऐसे इस सिनेरियो में दूसरे बंदे को अलाउ होना चाहिए कि ठीक है, उसने कर दिया, नाउ यू इक्वेट, देन इट विल बी फाइन, लाइक इवन हो जाओ. Revenge is also good. Therapeutic. Of course. फिर ओपन मैरिज ही कर लो, फिर हैप्पी दोनों भी. बट ठीक है, क्योंकि ना मैरिज में देखो, अगर आप ओपन मैरिज में ना, ये है कि ठीक है, सब चीजें हैं. आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, बट फ्रॉम पीपल, तो फिर देयर आर लॉट ऑफ रूल्स यू पुट कि ऐसे 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 रहेगा, ठीक है. तो फिर कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं, क्योंकि फिर ऐसा नहीं है ना कि आप लोग फिर, क्योंकि अटैचमेंट ये है, देन विल कम अ टाइम, देन मे बी देयर मे कम अ टाइम आपको दूसरे के साथ रहना है, सब चीजें ना, देन लव फ्लूइड एंड वेरी फ्लूइड. रूल्स ऑफ द गेम चेंज. अभी गेम चेंज हो चुकी है, अभी वो वाली नहीं चल रही है. अभी now this is, तो मैं I feel I want to live with that person. हाँ. Then everybody gets this, you know. और हम चीटिंग के साइंस क्या होते हैं? सबके सेम रहते हैं? Red flag. हाँ, what are the red flags that For cheating, yeah, एक तो okay, one telltale sign is the person will take more care of you. ठीक है, will be overly, अच्छा, ज्यादा केयर करेगा? ज्यादा केयर करेगा, और आप उससे आपकी ज्यादा केयर करेगा. दूसरा, उसका रूटीन, जैसे बहुत लेट आना या ट्रैवल ज़्यादा होना, ठीक है. और कई चीज़ों में जैसे थोड़ा सा छुप के बात करना, है ना, और लेट नाइट दिस एक्सक्यूजेस, वो सारे होता है. तो केयर ज्यादा क्यों करते हैं? मतलब अगर गिल्ट और गिल्ट हैज टू, देखो, गिल्ट और शेम दो चीज़ें हैं जो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा, विक्टोरियन टाइम से गिल्ट एंड शेम, उसी से हमने सोसाइटी को जंजीरों में बांध के रखा है. तो गिल्टी फील होगा तो आई हैव टू डू, रात को सोना है मुझे, तो फिर मेरे को करना पड़ेगा ना. और क्योंकि यू नो दैट इफ यू आर चीटिंग, यू आर डूइंग रॉन्ग टू समबडी एल्स, जिसको आप पे भरोसा है. इट्स लाइक ब्रेकिंग अ ट्रस्ट. तो आप क्या करोगे? आप शो करोगे आप तो केयर करते हो, ये करते हो. आपका गिल्ट, ये नहीं कह रही कि कॉन्शियसली ऐसे, बट हाँ, देयर इज अनकॉन्शियसली ऑल्सो आई विल वांट टू गेट माई सेल्फ विदाउट गिल्ट. आपके लिए गिफ्ट्स ले आएंगे, वो ले आएंगे, कई चीज़ें करेंगे कि जिससे. तो ये तो एक बंदा है या बंदी है जो भी है, मतलब कॉर्पोरेट में है या फिर अपना बिजनेस है या कुछ है, somebody who continues to go out and you know for living and all. एक हाउसवाइफ कैसे करेगी चीट?
मतलब she has to cheat, like what will be her signs? I hope people will not tell me I'm telling them how to cheat. No, no, definitely not. But actually, you are telling them how to catch the other person cheating. That's So हाउसवाइफ, जो हाउसवाइफ, ऐसा नहीं है देखो कि आप चीट करते हो ना, तो आप ऐसा नहीं है आप बहुत अननोन और बाहर जाके इन अ कॉर्पोरेट व्हेन यू गोइंग फॉर अ जॉब यू कैन हैव यू मीट डिफरेंट पीपल. but there is easy. मतलब at least you are away from for 8 Here years. it will be- कुछ भी. अब एक घर वाला बंदा के cheating के signs क्या होते So suppose you go to the market, हाँ. कोई घर में तो वो नहीं रहता, you go to your kitty party, whatever you have, you are going out, you're going to do this thing, अपने स्कूल के अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, बहाने से. तो और वहाँ आपको लोग मिलते हैं, फिर आपका बहाना रहता है मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं ये करने जा रही हूँ, वो करने जा रही हूँ, then बहुत सारी चीजें, you just get out of the house. Get out of the house and so मतलब guilt और shame जो है men and women को एक जैसा affect करता है या here also there is some difference? They're right. Women are more emotional, like you said. So they, and women are also more resilient. ठीक है, so they, because Resilient in a way like I would like. in this they're more stronger in many sense emotionally. So and the problem is that women get, because marriage में ना थोड़े years के बाद एक बोरियत हो जाती है और एक woman को ज़्यादा होती है अगर especially if she's a housewife ना, तो कुछ है नहीं, ये नहीं है, so then जो भी affection दिखाता है, it's not, women don't go for sex, they go for affection. किसी ने attention दे दिया, किसी ने ये कर लिया, conversations हो जाती हैं, बातें होती हैं, बातों से फिर आगे बात बढ़ती है, फिर और आगे फिर ये सब होता है, because deprivation तो रहता ही है, ये कई बार तो for no reason also होता है. You just look for a change, you look for, It could be pure attraction. yeah, you look for adrenaline high. आपको चाहिए जो initially relationship में establish. So like in this case अगर ठीक है deprivation है and everything, do you think it's justified for a woman in the house to go about seeking for some adventure? किसी के लिए भी for a woman, और अगर आपको लगता है कि दूसरे spouse के end से कुछ है, so is it like of course you should talk about it or you should just go about and seek an alternate way? See, they don't, I think people just don't, sometimes you seek and sometimes it happens. So I don't want to make a value judgment on it because ठीक है, हो गया, कई needs होती हैं, it's also a need. ना, so कितने years हो जाते हैं, there are things are not okay, somewhere things are all okay and still you go. So I think it's up to the person. उनके लिए क्या है important. आप कितनी चीजें खो देते हो, खोना चाहते हो, या you can put on stake for this. और सबको अपना एक feel good चाहिए, चीजें somewhere where people treat you well or somebody जिसका एक whole attention आपको मिलता है, क्योंकि initial stages of love में तो वही है ना, full attention, high adrenaline rush होता है, you feel that. और फिर अगर if you're into it physically, this also then तो hormones तो होते ही हैं, and they are like total control of the this. That is a different thing. Dopamine है, serotonin है, you're on a high rush है पूरे time, then you take care of yourself. Every single cue, body is more alert. It's like stress में होता है ना, एकदम alert, you are alert, everything. जो तीसरा phase आता है attachment and commitment का, then you relax, then it's a different thing. But ये तो high होता ही है, and affairs भी जो भी होते हैं 6 महीने से ज़्यादा, 2 साल से ज़्यादा नहीं होंगे अगर चले, they fade away on their own. yeah, the passionate ones. पर अगर होते हैं then it leads to more complication, क्योंकि हम 2 घर में तो नहीं बच सकते. And there are so many crimes. मतलब affairs contribute to crimes. Of course, everything they do. और even this, अगर आप देखें तो लव का एक साइड तो वही, जब इतना सारा आपका टेस्ट्रोस ये सब है ना, when you are in absolutely in passionate love, then OCD, obsessive stalking, ये वो सारी हमारी थ्रिलर्स भी तो उसी में बनी है कि स्टॉकिंग, ये वो करना, फिर मर्डर करना, या स्टॉकिंग द मैन, स्टॉकिंग द वुमन, उसके पीछे पड़ जाओ, ये करो, यही होता है, बिकॉज यूर ओनली थिंकिंग ऑफ दैट. उसका थिंकिंग से ही आपकी बॉडी इतनी स्टिमुलेशन होती है, चार्ज अप हो जाती है. इट्स लाइक कोकेन. डोपामिन जब रिलीज होता है तो उसका इफेक्ट तो कोकेन का जैसा ही होता है ना, हाई, वेरी हाई स्टिमुलेंट. ये है, पूरे टाइम फैंटेसीज आती हैं आपको, थिंकिंग अबाउट द पर्सन. वो मूवी नहीं थी शाहरुख खान की, डर, हाँ, वो क्या थे, वो तो ये exactly the obsession. So what about X? Like
एक्स का चैप्टर अगर हम खोले तो एक्स से अपने एक्स से फ्रेंडली इक्वेशन मेंटेन करना चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, मतलब इट्स वन एस्पेक्ट इज इट इज इंडिविजुअल थिंग्स, ठीक है, अपने स्पाउस है, बट व्हाट हैव यू सीन आपके जर्नी में कि मतलब ये हेल्दी रहता है रिलेशनशिप के लिए के न्यूट्रल रहता है कि नहीं ये इसेंशियली करना ही नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ कोर्स इट विल ब्रिंग इन कॉम्प्लिकेशंस एंड यू might just just start it again. So actually, if your relationship has been closures नहीं हुआ है ना आपके past relationship में, तो जब भी आप ex के साथ जाओगे, some things will happen. ठीक है, अगर closure हो गया है, तो जो relationship खत्म है, तो वो खत्म है. Then it's like a friend. It's like meeting X, Y, Z in your life. ठीक है, closure नहीं, and don't try to revive those memories. If you try reviving, especially if it's your first crush or something, then you get into a problem. Better to stay away. हाँ, यार दुनिया में इतने सारे लोग हैं, एक्स के पास जाना ही क्यों है, मतलब बात क्यों करनी है. And if sometimes your ex is your friend also. हाँ, हो सकता है कि could be a family friend or something like in corporate. अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, कोई बंदा है कि हुआ है, आप चाहते भी नहीं हो तब भी आप उससे confide पड़ेगा, उसको इतनी चीजें confide कर देते हो, ये कर देते हो, तो वो एक पास भी है और फिर जो कंफर्ट लेवल भी है कि उसको आप बता सकते हो कई चीजें, उसको पता भी है, especially if it's in the same corporate, same space. So but is it like healthy for a relationship? See, it's how you deal with it. Yeah, how well you can maintain boundaries, because that's where it comes. You have to maintain boundaries. You have to learn to say a no to certain things. जो Gen Z भी नहीं कर पाती है कई बार. You have to say a no to certain things. और even in a relationship, अगर आप दरवाजा खुला रखोगे, तो फिर आपका temptation होगा मैं walk out कर जाऊँ. हाँ. So at least initially, you should keep the door closed. कि हम इतने साल मैं दूंगी relationship को. Toxic हुई, unhealthy हुई, तब तो नहीं, तब तो door close कुछ नहीं, you have to get out. Most people don't, and because we have एकदम दूसरा side भी है ना, toxic relationship, violent relationship, red flags हमेशा देख लेने चाहिए. And what are the red flags of a toxic? मतलब violent तो essentially बहुत ही ज़्यादा prominent sign है. But what are the underlying signs of a toxic relationship? It begins with small microaggressions, जैसे हम क्या gaslighting है. A person जैसे you will know कि आप उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाते. You don't know, unpredictable है, and she wants to control. क्या है, फोन क्यों देखना है, सब चीजें हैं. Small things, देखो रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट और स्पेस दोनों होनी चाहिए. You should have certain things. एक बार जो है राखी एंड गुलजार की ठीक है, they separated over one thing, but one thing she had said, या सोफिया लोरेन ने भी एक कि तेरा ट्रस्ट भी स्पेसेस. अगर आप एक रिलेशनशिप में जा रहे हो तो ट्रस्ट बहुत जरूरी है. सो यू शुडंट ओपन समबडीज डायरी. कुछ भी है, कई चीज़ों पे ना उतना स्पेस देना चाहिए. हर चीज़ क्या होता है ना कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मैं इससे कमिटेड हूँ तो सारी चीज़ें होनी. दैट पर्सन हैज टू बी योर फ्रेंड, स्पाउस, पार्टनर, बेस्ट फ्रेंड, मदर, फादर, एवरीथिंग. नहीं हो सकता भाई, वो आपका हस्बैंड है. हस्बैंड अपनी, जैसे हम अपने बच्चे के हम फ्रेंड नहीं हो सकते हमेशा. हम मदर है और या फादर है, हमें खुद भी नहीं पता चलेगा, वो हमें नहीं बता सकता हर बात, और हम सुन भी नहीं पाएंगे. मतलब कितना भी accommodating होंगे, बट वो डिफरेंस और वो roles, boundaries. So don't look for one thing in a man or a woman, and don't मतलब और स्पेस दो, क्योंकि हमें सब रिलेशनशिप्स चाहिए, है ना. इनिशियली हमारे पेरेंट्स ने अपने फ्रेंड्स वगैरह सब कट गए. मैन के तो थे बट वाइफ के कट जाते हैं. सो लेट एवरीबडी गो. दैट इज वेयर द होल स्टोरी स्टार्ट्स, कि आपके पास कोई आउटलेट ही नहीं है. सो वी हैव टू गिव स्पेस इन अ रिलेशनशिप, बट इट ऑल्सो हैज टू बाइंड अस, क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेसी सबको चाहिए, अपनी प्राइवेसी लेनी चाहिए ना, और उसमें वरी मत करो. तभी हेल्दी बाउंड्रीज even if you're a couple, it doesn't mean that you don't have boundaries. हर person की अपनी एक boundary होनी चाहिए. So जैसे one school of thought is that you should not have मतलब once a man or a woman is committed, so opposite gender के friends नहीं होने चाहिए. You think कि नहीं, मतलब Most unhealthy, है ना, most are unhealthy. This is not the way. क्योंकि जो चीज़ आप stop करोगे ना, आपके उसी की तरफ आपका ध्यान रहेगा. अच्छा, most unhealthy to stop. हाँ. Okay. See, now if I tell you, don't think of the purple elephant, आप उसी के बारे में सोचोगे.
हाँ, अब अगर आपको कहे कि तुम्हारे कोई मेल फ्रेंड्स होने नहीं चाहिए, वो या फीमेल फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए, तो आपका भी ऑब्सेशन उसी में है, कहीं कोई फीमेल फ्रेंड तो नहीं है, फोन चेक करो, ये कुलीग से क्यों बात करो, ऐसे नहीं होता है. अब जब इतना सारा वी आर इंटरैक्टिंग विद मेल्स एंड फीमेल्स, यू शुड लेट गो some things. Now, see, if a person is yours, if the relationship is so healthy, वो घूम घाम के भी आप ही के पास आएगा ना बंदा. वो faith रखो, make the relationship in such a way that the person has no other option. Whenever she compares you, it's there. But this is generally, but there are deviations. There will be people who will cheat, and those are the red flags. That despite everything going well, somebody could, वो लगे कि मुझे तो excitement चाहिए. Those are red flags. If somebody doesn't respect you, if you are the one who's always doing work, कुछ गलत होता है वो stone walling कर देता है. I mean, या ghosting कर देता है, या आपसे बात नहीं करता है, आपके पेरेंट्स उसके पेरेंट्स के सामने, या both ways, both मेल फीमेल जो भी है या जिस भी जेंडर का आपका, तो वो सारे आपको देखने चाहिए. माइक्रो एग्रेशन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको वहाँ नहीं जाने देगा, ये कपड़े क्यों पहने हैं, यू लुकिंग सो बैड, छोटी छोटी सी चीज़ों पे आपको इंसल्ट करेगा. द सेंस आपके सेल्फ एस्टीम पे छोटी छोटी चोट डालता रहेगा. अरे दिस डजंट लुक गुड ऑन यू, डोंट वेयर दिस, डोंट वेयर दैट, एंड इट्स So ma'am, this is coming from the male perspective. Now, इसी के अगर आपको फीमेल का टॉक्सिक मतलब फीमेल साइड से भी तो कुछ टॉक्सिसिटी होती होगी for a man. So what would be the clues for that? And if at all you have come across any case, you can keeping the anonymity of it, you can always tell us the story. So it is the same thing. जो बंदा आपको इज्जत नहीं दे, doesn't, for everything puts you down, makes fun of you, छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी नीड्स पे आपका मजाक हो रहा है, or something, always whatever you do is not good enough, checks, gets insecure, checks all your phone, mails, other things, hides, okay, all of that, those are signs. And they are like gender neutral. They both the genders do. Yeah, both. In fact, and then for everything, and otherwise, then there are things like blaming you, playing the victim. It goes on to that. Sometimes it's not emotional abuse. And it's not verbal, but it's emotional abuse. In various ways. Words. Right. And, other things like, there's this case of mine. She, very nice, but she felt, she suspected that probably her husband was, so everything was nice, looking after, cooking, taking full care of the, but she did not let him have, they had no physical intimacy. And it was for more than 7 years. And at the prime, she wouldn't agree. Every time it would be just hugs and kisses. And why would anybody do that? Because she felt it's this passive aggression. Okay, so she suspected. she doubted that He had is going with around somebody. staying with someone, तो deny किया. और ऐसे डिनाई नहीं कर रहा है. टाइम नहीं है, 2 बच्चे हैं, 3, you have to take care of the kids, all the time cooking, different meals for everybody. So by the time you have, and then you're doing XYZ thing, taking care of going and taking care of the mother-in-law, taking care of this, everything else. So it is like you're so tired, and you have to clean the house yourself, this, that. So by the time you're gone, and then you have to put the kids to sleep. So you sleep in the bedroom. There's so many excuses, so many ways. Right. So how to build up trust? Like वो भी एक way, and like you said, investment and everything. So it requires a lot. So like how to go about making a beautiful relationship and building trust? I don't know if I have the formula for a beautiful relationship. I wish I had that. Abhi puri dunya is trying to find Yeah. and nobody knows what love is. But there are small things like mutual respect for each other, mutual concern. And there are certain things like, trust is, it's either there or not there. Trust means you have to let go. Don't if we are always looking for mistakes, like a fishing rod looking, fish aaya, main pakdo, then it's not going to be it's like
your parents let you be what you want. Because you're going to live together, two people. We try to be best buddies, ठीक है. हाँ, छोटी मेंटेन मत कर. हाँ, कि और फिर हम जब लड़ाई करते हैं ना, तो हम स्टार्टिंग से करते हैं. जब मैं शादी होके आई थी, और मदर सेड दिस, हाँ, फादर सेड दिस, ये हुआ था, तुम्हारी बहनों ने मुझे मेरे लिए वो नहीं करा था. एवरीथिंग इट बिगिंस लाइक दैट. एंड फॉर द मैन ऑल्सो इट्स लाइक ये हुआ, वो हुआ, सब चीजें. सो जितना पास को अकाउंट्स हम रखे देते हैं. सो इट्स बेटर दैट द फाइट स्टेज इन द प्रेजेंट. क्योंकि दो जने रहना इज नॉट नॉर्मल, but you stay together, and there is something, and that's a big thing. So but you want to be happy also in a relationship. And sometimes, but when people don't respect, then it is better to walk out. If there is aggression, if there is violence, and कई चीजें ना passive aggression जो होता है, जैसे हम gaslighting कहते हैं, narcissists जो होते हैं, उनके साथ रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो दुनिया के साथ बहुत अच्छे होंगे, आपके साथ में आपको छोटी छोटी चीजें करेंगे. क्यों ये कपड़े पहने, go change, and कुछ ऐसा कर देंगे, या why should you go there? वहाँ क्यों जाके क्या करोगे, ये नहीं है, या क्या करोगे? I'm going out, not maintaining small things, so then आपको अंदर से नहीं लगता खुश. So relationship में respect चाहिए. Coming back to your question, you should respect each other. Unconditional acceptance होना चाहिए ना. And because conditionally accept करेंगे, then we'll come up. Should be unconditional. ठीक है, if I love you, I'll let it be. Space थोड़ी देनी चाहिए. There should be, it's like said, there should be distance, there should be spaces between your closeness and closeness in your spaces. Right. Okay, so that should be there. That should be the one part. Yeah, and I think when you love somebody, then you just love. Just love, Then it's right? just- Like it doesn't- with our, like they say ना, blood is thicker than water. कि blood relationships को आप सारे liberty देते हो. Whereas बस एक romantic relationship में ना, there is so much fuss involved. Exactly. अब आपका, if you have a child, उसको आप कितनी liberty दे दोगे ना? हाँ, कुछ भी हो जाए, they can always come back to you. Yeah, you will always keep that door open. हाँ. And we'll give them lot of leverage. ये है, चलो कोई नहीं, ये Part of growing up. And I don't know why we say कि growing up को हम limit कर देते हैं कि 18 साल तक तो grown up है, या 25 साल तक 30 साल, उसके बाद तो you don't have the margin to make mistakes. Like not as grave as cheating and doing all of those things negative, वो नहीं. But otherwise, as a person also, I think you grow every day. And Yeah, you should. I think that should be a little side. Because everybody is growing. A relationship is also emerging. When you are, say, when you're 20 years into the relation, 26, your children are big, there's a whole new lot of discovery. I see I see people, they just take on to travel. अब सब settle हो गए, बच्चे 30 साल हो गए, बच्चे settled हैं, ये है. then the bonding is at another level only. Then they go for travel, and they are going here and there, and you're discovering it's like a new thing. Because today people are not old at 50, people are not old at 60. People are on the move at 70, and so you just enjoy. After that, maybe you take it easy. But this is the time when you have no other responsibility. Right. Children are working, they are, so abhi grandchildren nahi hai. So just take it easy, enjoy life. So again, last two questions. Like, do you count flirting and cheating? No, flirting. Dekho, I will say that flirting is flirting. It's a healthy, because it is necessary for any relationship, for that intimacy stage. Flirting is harmless. It's like, otherwise, how else will you? If you cut out one stage of getting to know, then it is detrimental. Flirting is a normal instinct for men and women. That means it's not relation. You're not into serious things, but everybody likes that. It's like that small strokes, positive strokes you get. So, okay, somebody just comes and says, okay, you're in your friends and everybody, you're looking so good. Your husband's friends say that. And there are relationships in our society. We had certain relationships where flirting was normal. Now, it was Barbie or Devar ka, ya my relationship and friends ka, ye sab. It's okay. It's just that small pressure cooker के safety balls होते हैं ना, सबका वो strokes चाहिए. Everything is taken care of. It shouldn't get serious. If it has become, if it crosses a boundary, then it's not flirting. Then it's hitting out.
And there's a difference between hitting and flirting. That is, and hitting is not advisable, but Flirting is okay. is fine. Okay. And ma'am, what would be the advice that we hear so much? एक क्लिशे कोई आप ऐसा बताओ जो हम सुनते हैं कि relationships में ये करना चाहिए, but वो actually नहीं करना चाहिए. That turns out to be a real disaster if you practice that. Love is blind. Love is never blind. And love shouldn't be blind. They say love is blind because it's hormonal this, but it is not. It should never be blind. You should know what you're getting into. You should be aware कि हम इसमें ये सब है. और हम जब love is not blind, हम बहुत सारी चीजें देख के ही करते हैं, है ना. कभी कभी blind हो जाते हैं, but we are not. हम अपने जैसे जनों को ही ढूंढते हैं, अपना कई स्टेटस, सोसाइटी, सोशल, वो अनकॉन्शियसली हम वही चीजें देखते हैं. So this thing you shouldn't. Love is blind. Love is not. कि ऐसे हम गए और पटाख हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है. Okay. And love at first sight? Love at first sight, it's just physical attraction at first sight. It's not love. Love. Physical attraction के बाद ही love आएगा. We love. Physical attraction is just one step to that. Firstly, you like, okay, somebody. That's it. That's it. So, ma'am, that was wonderful talking to you about relationships. We had a great time, and thank you so much for your time. And we'd like to have you again sometime. Sure. Thank you so much. Thank you.